having very less methods to prepare for AI. For example, we are having peer-to-peer like friends, so that they help in for preparation of our interview. Secondly, we have some other tools like for Unstop, Geek for Geeks. They are having some solution, but that is not AI driven, and other than that, they are not feasible for 24/7. So we have used our AI model where basically the whole scenario is that the whole solution is driven by AI, where the candidate have to go to that dashboard where they are going to just upload their resume. After that, the resume will be analyzed by the AI, and the ATS score will be scored there. AI will also highlight all the points which are needed, and there is the point that in which company the candidate has to appear, and according to that, everything is going to be done with the AI only. The second thing that what is the technology stack? Front end we have used React.js, Next.js, TypeScript. Back end for we have used ORPC, PostgreSQL, and AI modeling, LLM, interference engine, response system engine, and further with that. The main workflow will continue in the demo session. So this is will move on to directly on demo. I see, I mean, by the time it gets settled. Same thing can be done with ChatGPT as well. Yes, sir. Same thing can be done with ChatGPT, but ChatGPT is very wide spectrum thing. It is very focused for technical interview. Like it will give the exact output. Like if I am lagging with some critical thing, like my communication is not well enough, it will highlight it. After that, if there is some coding question, like interviewer has to put up some coding question, there is a whole setup where IDE is there, where we can type or whatever the solution with the coding, and after that AI model will automatically just analyze it. What is the what is the score of that whole solution, and after that score will be generated. Score card will be generated where we can analyze. So we can say that the main, whatever the solution here we are having, it is basically focused with the IT jobs. In further future scope, we are also thinking to conduct other interviews. Yeah, of course. I mean, if you use ChatGPT, I mean, of course, it can help you with the technical questions and IT jobs, right? I mean, you give your profile, you give your job description, company. It will tell you like what are the all questions and the accuracy and the relevance would be much higher because it's a trained GPT model, right? So everybody, I mean, it's quite worked upon by OpenAI. So I mean, it will definitely have much more knowledge. The thing is that we have organized everything in a structured way. Like if we upload to ChatGPT certain resume, it will give random values each and every day. It will not follow up like if it is. No, why will it give the random value? I mean, sorry, but if you give the right prompt, it will not give you the random value. No, means I am saying that if I upload a resume, it will give fluctuating ATS score. Other than that, if we conduct a technical interview, it will not give a statistical data. As well as, yeah, there is thing that they store past data so that they can get from that data also. But the main thing is that still we need that particularly focused for the interview preparation. That's it. It is a problem statement. That's why we like that. Then the report will be there. But if I want to give a second interview, then in this our application, it's like it's storing the previous data. And for the next interview, it turns on the previous data like, but
user is not responsive from further questions. So next time we also focus on that part, like you are not answering those questions, now the preparation is going on very well, so you can answer this question right now. We are using like GPT from the backend part, but like it's just fine tuning the GPT for a particular task. Sir, other than that, we are also having some USPs. Like in ChatGPT, you are not getting some like preparation for aptitude round or other technical rounds which are conducted by specific companies like Google for their SDE role or product development manager. There are different things which are integrated with our solution where we can easily see, like if I'm targeting Amazon for ML, the whole question paper will be designed by that only, at that time only. And whenever we switch to that part, every time we get new answers, new questions. Yeah, but I mean, think like if I am going for interview, right? I'll Google it and I'll just see that what are the rounds, right? I'll understand, okay, this is my technical round. So same information would be there with ChatGPT as well. If I go and say that, okay, you know what, I'm going for SDE 3 round in Amazon, and this is my first round, can you tell me what are the rounds I have? Then it will tell you, okay, these are the 4 rounds, these are the preparation. So it's nothing that not known by ChatGPT. It's more like an environment. Like if we are doing any online interviews, so we know the process, like the screen will be there, any proctoring will be there, like the coding question, they need to switch the IDs. We provide an environment, like the question will be asked. Yeah. I got your point. You build an environment, and that will help one person to prepare for the interview. Yeah. Okay. Now I would like to call board by table number 029. Good morning, one and all, and good morning, good afternoon. Me, myself, Manu Saini, and my team Code Bytes, we have created a deepfake AI system tool which detects the AI-generated text, AI-generated images, URLs, and fake URLs. Like, imagine you are getting a voice note from a random person, and which is AI generated, and you can't detect that it is a real voice or AI generated. You're chatting with someone and you can't detect that the person you're chatting with is a chat box or automated messages or a real person message, and he asking for your money.
Like from your contacts, you get a message that I need urgent money, and you can't identify that this message is from himself or someone hacked his phone. Like we can also identify that with the text or the chat history that the AI generated that message. Like we have given a prompt, give me a paragraph of 10 lines about myself, and we will identify that this paragraph is an AI generated or a handwritten paragraph. लाइकली AI generated. So इसके लिए हमने क्या किया कि एक मॉडल ट्रेन किया है जो कि मॉडल दिखाने में वीक्स हो तो वो भी उसके लिए मॉडल हमने बनाया है। तो ये जैसे कि हमने एक जनरेटर मैन विद स्माइलिंग फेस, हमने ये एक इमेज जनरेट की है जो कि इसमें एक पूरी ये जनरेटर में चैट जीपीटी हमने बना के दी। तो हम सब इसको हमारे वेबसाइट पे लेके जाएंगे, अपलोड इमेज करेंगे, चलिए ठीक है ये इमेज है जो कि इसने बता दी। अब हम रियल इमेज भी डालेंगे, रियल इमेज ये एक रियल इमेज है जो हमने वेबसाइट से निकाली, ये एक रियल फेस है। अब लाइक यू आर गेटिंग अ वॉइस नोट which is like 11 labs which is very trendy with very accurate nowadays for AI generated human like generated voices. एक मॉडल ट्रेन के जो कि जैसे कि फेक न्यूज़ का भी दिखाया, हमने एक डेटा दिया है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है fake.rsv का एंड true.rsv का। उसके अंदर पूरा रिटर्न हमने जो उसका नाम है पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स को मैच करके कि हमारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो आर्टिकल लिखा हुआ है, उस पैटर्न के हिसाब से कितना एक्यूरेसी के साथ वो पैटर्न मैच कर रहा है फेक के हिसाब से। क्योंकि मॉडल ट्रेन में भी हम प्रॉम्प्ट डालते हैं तो वो ट्रू करता है, ट्रू प्रॉम्प्ट के साथ प्रॉम्प्ट डलते वो उसको एक पैराग्राफ में फॉर्म के वो फाइल में सेव करता रहता है, जो फाइल में दिखा है। ये fake.rsv की फाइल है जहाँ पे जितने भी फेक वर्ड्स हो सकते हैं जो कि मैच कर सकते हैं उस न्यूज़ को रिलेटेड। तो इस हमारे इस मॉडल को इसमें जो वर्ड्स जो हम आर्टिकल लेंगे उस वर्ड्स को इससे मैच करेगा कि इस वर्ड्स जो मैच हो गए कितना परसेंटेज में उसे कैलकुलेट करके कितना वो फेक हो सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेगा, 100% प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती कि फेक हो सकता है। ये जैसे कि एक URL दिखाता है कि एक फेक URL वेबसाइट तो हो सकता है नहीं हो सकता। ये सर एक विकिपीडिया का पेज है जहाँ पे जितने भी फेक URL है वेबसाइट के वो लिस्टेड है। हमने एक वेबसाइट ली cvsnews.com.co, हमने एक आर्टिकल लिया इसके अंदर से, इस आर्टिकल का URL लेंगे ऊपर से, उसकी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से जो आर्टिकल के जो पैराग्राफ्स है उसको रीड करेगा, हमारे मॉडल के अंदर जो भी वो पैराग्राफ उसको कंपेयर करेगा। एक वेबसाइट पे उसने बता दिया प्रोबेबिलिटी 82% फेक हो सकता है। अब जैसे एनडीटीवी एक ओरिजिनल न्यूज़ चैनल है, वहाँ से हमने एक आर्टिकल उठाते हैं थोड़ा। I found something unusual. आपने जो फेक इमेज डाला था, फेक इमेज डाला था, तो कॉन्फिडेंस लेवल सेम आ रहा था ऑलमोस्ट। हाँ सर, वो क्या प्रोबेबिलिटी में थोड़ा जो परसेंटेज है वो हमारे मॉडल में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है परसेंटेज, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत भी बहुत ऊपर नीचे, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल भी हो रहा है, सेट भी हो रहा है। सर जो टेक्स्ट है और जो न्यूज़ है वो एक फाइल के थ्रू हो जाता है, पर जो इमेज जो
जो न्यूज़ है और वॉइस है वो एक फाइल के थ्रू जाता है, पर जो इमेजेस है, वीडियोस है और वॉइस है उसके लिए सर मॉडल थोड़ा लंबा ट्रेन करना पड़ता है क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी एक्यूरेट नहीं आ पाती है। For image, it is not working well. नहीं, वर्किंग है, जो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज है वो सही है। हाँ, बाकी रियल फोटो रियल बताएगा, फेक जो हमने इमेज निकालेंगे चैट जीपीटी से वो फेक ही बताएगा। और सर जैसे कि हम ग्रामरली जो कि एआई डिटेक्टर है सब रैंक 1 पे, वो एआई जो डिटेक्ट करता है टेक्स्ट को हम लोग से भी कंपेयर किया है, वही टेक्स्ट हम इसमें डालेंगे। Now I would like to invite activators 047, table number 047. Good morning, good afternoon, judges. We are team activators and we have made a voice AI system which can integrate with businesses to receive their incoming calls and answer them. It's like a front desk receptionist which would answer your queries, incoming queries from customers or calls. It can create bookings, it can integrate with your existing system. So let's say you are using a CRM, it can integrate with that, transfer all the data or whatever was discussed on the call. People can actually interact with it in a natural way. The goal was it is simple for us while we build it, because traditionally when interacting with organizations which are on a larger scale, they usually have an IVR system where to press one for English, press two for Hindi, and then press a bunch of buttons, and we are usually just wasting our time. And that's not ideal if you are in emergency, or that's not ideal here, especially in this age of AI. So what we've done is a voice system, and actually it's much easier to show you rather than just talk about it. So I'm going to make a live call right now, and then we can interact with it live. Sure. So this is a demo for a banking simulation. We did this because IBM is most common in banking and other services. So let's make a live call and hear it. So this is a number. Let's call it. Welcome to customer support. My name is Arya. How can I help you today? Hi Riya. I'm calling on behalf, like I've lost my car. Can you help me with this situation? I lost my credit card. I'm here to help with banking services like card support, account queries, or complaints.
So what we, like you saw the demo, now some of the special things about this is it can integrate with any system within 1 to 2 days. And we previously on 14th and 15th, some of the companies and their representatives actually reached out to us. We are in talks with one of them to launch their pilot test program. The main thing is it can handle multiple languages, concurrent calls. So right now it can handle 20 concurrent calls anytime. So there's no कृपया करके आप होल्ड कीजिए या फिर वो जो जो लाइन आती है वो नहीं आएगी इसके अंदर. That's completely skipped. That's done. That's the thing of the past right now. यहाँ तक ये नहीं, it can also, since it's basically an AI system, it lives on the internet. It can actually execute functions. It can integrate with your existing CRM. So let's say you are using Zoho or HubSpot or GoHighLevel or a bunch of others. It can actually do that call. It can actually call their APIs. It can do post-call data extraction. That's our unique thing. So what's post-call data extraction is? Let's say you are managers. You actually want to know what happened in that call. A customer escalated, and AI can also escalate to you. So if AI agent, a query comes in from customer and the query is out of the scope for the AI agent. So what it can do is it can do live transfer of call right now. Like we don't have that setup for, we need a professional business support for that. And since we are not a organization, but it can do that. It can connect to you, and then before transferring, it's not a cold transfer. It's a warm transfer. So AI agent will give you a summary of what has been spoken in the call. So you are not directly introduced to the customer and then you start the whole process. You know the issue already, and then you can continue to pick up from there. So in the post-call data extraction, take the line. If you can say that this is right, open the call logs. Yeah. The call logs. Sorry, not analytics, call logs. Yeah, in the call logs, let it go. Okay. So it's as you can see, that's the I called it. Just click on it. Now you can see everything. The transcript is here. Sure. The transcript is here. The summary is here. What was the sentiment? Did the agent actually did something work, or and you can do anything. You can do post for data analysis. You can do your data analytics. If you go into the analytics tab, you can do that also. Open the analytics tab. So that's the whole system. That's our project. We have named it voice system, and this is Team Activators. I'm Devansh Survey. Thank you. If any feedback, please. I mean, just one thing, maybe the negative side is how do you prevent the hallucination coming in AI side, right? Because that's one thing, yeah.
So coming into hallucinations, we have actually set up guardrails. Like right now, I could not show you that part. But if you talk about something completely random, let's say, like what's the weather? I want to walk on beach or something like that. It would not do that. It would acknowledge that, okay, you are talking about beach, so please connect to the respective authority, but let's focus on my scope, which is banking related, your general queries. I can help you with UPI, I can help you with card related issues, something like it's what's in this scope, it can only act on that. So we have set up guardrails, like in right now also, if you call again and ask it something random, it would not answer that. It would acknowledge that, but it would not answer that. Because we need to acknowledge it, otherwise it would feel very charming. Hey, I said something, but it's not responding. Is it human, or am I talking to AI? And previously on 14th and 15th, we showed this to some company representatives that had visited us, and we actually then told one of the representatives that, hey, this is AI. And he was shocked actually that, hey, this is speaking so naturally. And since there's a lot of commotion right now, you can also, we have simulated that you can also see office workers typing in keyboards or some random background noise that makes it more human, more natural. That's here also. And we could not, actually, we could not hear it because there's a lot of commotion and a lot of echo here. Okay, thank you. Thank you. This is Team Hydrates. Now I would like to call हम भी बना लेंगे टेबल नंबर 085. टीम नेम हम भी बना लेंगे. Hello. Namaskar everyone, this is Muskan Sharma and I am here to present our project, Zig, on the behalf of my team, Hum Bhi Bana Lenge. So everybody in this room might have applied for jobs and internships, and we all know the reality of the process. It's hectic and it's too much time consuming, We apply for it in the same form every single time and we upload our resume every single time. It wastes and consumes a lot of time. This is where we step in. Zig is basically a Tinder in disguise. It sorts internships on the basis of our skill sets that we have provided as a user, and it is as easy as swiping right. We spend a lot of time swiping, but it still, it seems like a lot of work when it comes to applying for jobs. So this is the workflow. In this, basically, there will be two things. There will be a user panel and there will be a panel for the HRs. In the user panel, there will be, you will have to upload the resume, and then on the basis of that, your profile will be made automatically. Then you will be suggested with the jobs that matches your skill set, and then you just have to swipe right. It's as easy as that. And as for the HR's panel, you will have the users shortlisted, and then if they swipe right on your profile as well, it's a Zig and you can start messaging there. Yeah. Now, the business model. Thank you. Yeah, and as for the project, so the job seeker, you have to upload your resume. You have to select the domains as per your interests. And
and you can just swipe right or left as per your, you want whatever. You can also see your profile here, which will be made automatically as based on your resumes. Matches, there are no matches yet, then there are plans, and we have made the logout very simple because we have to show it right here. Yeah, so I just have one question. I mean, as an HR, if I post a job, might get thousands of applications. Exactly. How would I be getting the most relevant or most potential candidate on top of all this? So this is where our AI system enters. It is basically a superpowered recruiter. It sorts the applications based on their skill sets, their ATS scores, and their years of experience. There will be two sections for internships and for jobs. So they won't have to check for the years of experience in the internship one, but for the job one, they'll have to sort of look at it. And it will be shortlisted. The creamy layer will be shown to the HR. So it's basically sorting it for the HR. So it's beneficial for the students and for the HRs as well. It's a very academic subject. Which one is your best competitor for this? Ma'am, Source and Jobber, both of them are very much into the market, but they don't have the HR thing in it. They are not for the HRs. The spamming thing is very real in their case, so we are sorting that. If job seeker you are uploading your resume, Yes, sir. if there is no HR panel, then where that data is going on? Ma'am, the data is being stored on the cloud, so that it's highly available. And as for the AI, we are using Gemini API for the same to sort it. And also, we don't want it to be chaotic, and we all know that AI is not as accurate. So we are providing it with parameters like ATS score and skill sets and that job experience. How it is different by, how can you differentiate Indeed and your app? Ma'am, because Indeed is not as easy as swiping right. Sorry, I probably just from my recent experience, I think Naukri.com also has this feature of swipe left. Naukri.com. Naukri.com It has a feature of swipe right and swipe left. But it doesn't have the HR feature. Why they have? No, it doesn't sort to the profiles Have you checked the latest one, because I believe it does have some I HR. checked it when we were. Because see, I mean nowadays, I don't want to demotivate you first of all. This is really great, and the way you presented was really good first of all. But this AI enabled is now with all technologies, like all the apps has, right? So I would really wonder if country's #1 job portal doesn't have AI-based rating for the profiles. So they does have. So the idea is really good, but the problem is I believe it's something implemented already. So we might probably try to create something called learn, isn't it? Because right, swipe left and right is there. Your ordering of the application and prioritization to the HR view is already there. So nothing new would be creating if it all we build this idea, I mean, this is my very personal perspective. I can be wrong as well, but this is how I see it. So we'll try to add. Yeah, no, this is good. Like I said, I don't want to discourage you or something. I really liked it, the way you presented, the way you built it. Your UI and the ease of use is really good. But the only thing is that this is already done, in all the few portals. So, what's the innovation? Sure, sir, I respect your opinion and I'll work on it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
would like to invite Bug Smasher, table number 023, and they will be connecting us online. Am I audible? Yes. Okay, shall I start? Yeah, good afternoon, esteemed judges. I am Arya with my team Arya and Arya. Our team measures are presenting our model Neuroguide AI. What is Neuroguide AI? Neuroguide AI is bridging a gap between epileptic patients and between the doctors. So basically what Neuroguide does is transform raw brain activities which are EEG datasets that is converted into solution of brain waves where we are using our ensemble tri-state ensemble technology which includes CNN, random forest and XGBoost. Let me share the PPT. Is it visible? So, imagine there is a short circuit in your brain that could happen at any moment while you are traveling, swimming, or just pitching something. This is a problem of 12 million Indians, and globally crosses a mark of 50 million. And with a staggering 75% treatment gap, this is a problem in low-income regions or rural areas generally. So there are severe shortage of neurologists, which because they have to do this brain analysis manually, and this takes time. And we are bridging this gap, making a first stage of screening where our model estimates how many chances of being an epileptic seizure you have. So it records your brain activities and your past history of whatever medical surgery or anything. Calculates all these things and suggests if any epileptic seizure can be happen in your future, nearby future. So it does so by taking a raw analog brain signal, and the data we have used is from a certified college, Bonn University, and we have taken data sets up to around 500 data set, part of 500 data set, in which every data set is divided into people who has epileptic history, people who are healthy, and people who have chances of being an epileptic person. So our model is a simple technique of brain particle resolution where it detects and showcases a range between 0 to 100% how likely you are being an epileptic. So it takes label like age, sex, blood group and medications and their clinical history, and maintains patient history, and this test can be done various times according to their brain signals, recorded history. So this is the sample, and this EEG sample is 173 Hz sampling rate. So what happens is when we measure these analog signals, different machines use different types of hertz of waves. These data set can be different. So what we have used is mapped to our AM model.
So the volume recording is 500 recording and there are 4091 samples per recording. And the data set we have trained it using 80-20 method. 80% of the data is made for testing. Sorry, 80% data is made for training, 20% is used for testing. And the 3-layer technology that runs from CNN, XGBoost, random application. And the accuracy that we have achieved 98.3% until now using this algorithm. So my teammate will now present a live view of the website. What is it, how does it look, and how does it work? Can you please share on screen? So as you can see, there is a pattern first of all about how these business look like. It's just a hologram, and after this there is a section to select a model, and this is a category S where it is sure that this person has epileptic history. So there are more chances that it could be a person with epileptic history. So this model calculates and gives a risk of 9%. Sorry, it is analyzing. It is a 87.6% risk. And as we scroll down the website, we will see this slide from the data we have to, and we further scroll it, then we will see a patient history where the recorded activity can be made with a history of the patient, every activity, and the report can be generated and given to the doctor. Any questions? Himanshu, one question, when you were creating it, since it belongs to the medical science, Yes. it's just not like probably an engineer can do the accuracy and everything. Like, how did you collaborate with your medical folks, or how did you really build it? So if I am able to get correctly, you are asking how the accuracy we have reached is. I mean, it's a medical thing, right? It cannot be done just by engineers. Sorry, could you repeat again? I'm saying that since it belongs to the medical field, have you engaged with any of your medical folks, any of your buddy who belongs to the medical science? Sorry, I'm not able to understand. I think your voice is cracking. Can you just get a gist or type the question if possible? No. Yes, yeah. Let's move on. Right. Yeah, so I'll start with how this idea came up. So when we were learning AI in our 6th semester, so our professor told us about this data set that we have found. So the pattern and the noise filter in this data set were good. So he said that there will be hackathon in our college also. So it was a medical college hackathon because our university also offer medical part. So they told me it will work and it will be a good opportunity. So we developed this model or changed the algorithm when we came to this Arya set. Much a good idea actually, and different also. It's a good one. Okay.
Now I would like to call Buildex team number 091. Buildex team number 091. Hello. Good afternoon, everyone. My name is Akshan Soni and my team name built to solve the problem clinical based medicine availability crisis. सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ मेरे पर्सनल लाइफ का. सर मेरी मदर माइग्रेन प्रॉब्लम से जूझ रही है. मैंने वो क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन देखी है. एक दिन क्या हुआ, उनकी मेडिसिन लॉन्च हो गई. मैंने नियर बाय स्टोर्स पे पूछा, ऑनलाइन देखा, कहीं भी मेडिसिन नहीं मिली सर. फिर मैंने सर यही सोचा कि क्या आपको अल्टरनेट मेडिसिन दे दो जेनरिक. मैंने वो दी, बट मेरी मदर ट्रस्ट नहीं कर पाई. उसकी वजह से सर मेरी मदर को माइग्रेन इंक्रीज हुआ और वो ऐसी कंडीशन आ गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. ये सब बहुत बड़ा इशू है अपने इंडिया में. प्लीज वेबसाइट I can see there is a two portal. One is a patient and one is a clinical pharmacy portal. Please go ahead. Sir, I created a prescription-based model that read a doctor handwritten prescription. Also, please, and prescription model. I upload a prescription that written by the doctor, handwritten, and that AI can solve into the simpler form. I can see there. So the AI will also automatically generate reminders for you. So जो handwritten prescription है वो भी हम हमारा लोकल मॉडल पे चल रहा है. ये सब जो पोस्टेड नहीं, कोई भी जेमिनी पे यूज नहीं की गई है, ओलामा का यूज किया गया है. सो लोकली चल रहा है, तो सिक्योर है ये काफ़ी उसकी वजह से. Sir, it is show your medical reports, medical prescription. So it extracts medicine information. मतलब जितनी भी मेडिसिन की हैंड रिकॉर्ड में हैंड रिटन जो मेडिसिन थी वो एक्सट्रैक्ट हो गई हमारे इसके अंदर. और उसके साथ रिमाइंडर्स भी एक साथ ऐड हो चुके हैं. जो रिमाइंडर्स जो दवाई उन्होंने ली अपने प्रिस्क्रिप्शन ऐड करे, साथ साथ रिमाइंडर्स ऐड हो गए. I made the clinical based medicine inventory to provide the clinical medicines to patient who is need. How would it help? Like, will it provide the medicine, like deliver the medicine? Yes, I deliver the medicine from the clinic to patient. There's my two model. First clinic to home, and second model is my clinic to nearby medical store. No, because clinical based medicines inventory only doctor, only clinic. You know that जो clinical जो medicines होती है वो केवल आपको उसी clinic में मिलती है और कहीं अवेलेबल नहीं होती सर. वो आपने ये प्रॉब्लम कहीं देखी हो, मैं आपको बता सकता हूँ सर. I understand, but it's basically getting manufactured, and then it goes to supplier, then supplier to clinic. Yes, sir, supplier to clinic. Yes, sir. You say right. But manufacturer does not give me to directly. Okay, understand. So I approach the clinics to provide their medicines to the direct patient. Because
this is a very critical problem. I have a report and records, research my that says 70% of middle class only prefer branded medicines, not prefer generic medicines. I also include that अपोलो और टाटा वन एमजी जो इतनी बड़ी कंपनी है वहाँ पे भी जो क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन वो अवेलेबल नहीं है. मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ. Yes, sir. But who's? Yes, sir. Yes. They might not have that facility, but they will order the stock. But sir, आपको एक सेट मतलब कुछ पूछना चाहता हूँ. आपके मेडिसिन क्लिनिक से 50 किलोमीटर दूर है. Suppose that your medicine is lost or something. How it is different, like online delivery, we are getting online medicines also. So how it is different from that? Online medicines are generic medicines. No, it's not generic medicine. Sir, most of medicines are generic, not medical. Whatever prescription I am sending to them, according to them, they are delivering that medicine. Right, and most of the medicines are very, I don't know like what medicines are, but most medicines are available. You are saying that medicine which are not available nearby, you are trying to supply medicines. I can say, sir, most of medicines are available same sort, not the same. No, same brand. Same brand. I said, sir, that Apollo से मैं आपको दिखाना चाहूँगा. आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जो मेडिसिन नियर बाय मेडिकल शॉप पे अवेलेबल नहीं है जो क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन है आपका I can explain probably what he's trying to say. Suppose there is an XYZ doctor, okay? He writes a very not so commonly available medicine, which is available at his hospital or clinic only. So as a patient, I would have to go travel to that clinic and get the medicine. That's the problem statement he's quoting. But the problem is that that's not entirely true. Because whatever, generally doctors write are available. I can give you my example. I always find the medicines online. If at all they are not online, I can definitely go to my nearby medical shop. He will talk to supplier and get the medicine. Yes, sir. He talks to the supplier and not the clinic, the supplier. सर हमने ये जो आप बोल रहे हैं ये मैं भी करता हूँ कि अपने नियरबाई स्टोर पे जाकर बोल दूँ भैया मेरी मेडिसिन खत्म होने वाली आप मंगा दो. सर बट कई बार सप्लायर भी देने से मना करता है. आपको पता ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उनकी इन्वेंटरी होती है वो बहुत लॉन्ग होती है सर. केवल ये क्लिनिक जो आप उनके रजिस्टर्ड क्लिनिक से वहाँ भी जाती है सर. और मैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सर मैंने आपको 2 मॉडल में डिलीवरी बताया. एक तो डायरेक्ट टू पेशेंट हाउस एंड डायरेक्ट क्लिनिक टू नियरबाई मेडिकल स्टोर टू मेक ए ट्रस्ट. सर आप जो आप बात बोल रहे हो देसी भाषा में करते हैं कि भाई तू मंगा ले. बट मैं इसको ऑनलाइन वर्जन में भी लेके जाना चाह रहा हूँ सर. और मैं आपको सर बस एक मौका आपने जो बोला कि ऑनलाइन उस सेम ब्रांड की मेडिसिन मिलती है. सर मैंने कुछ रिसर्च की थी और कुछ मैंने देखा है तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ. अपोलो को आपने पहले कोई मेडिसिन सर्च करो. No, it's fine. I mean, it's okay. You might find 1 or 2. I have also a research report that Indians prefer brand medicines more than the generic medicines. I research and I explore the internet of Apollo, Tata, and MG. That website is a trustable website, but there are no clinical based medicines available. Some of available are lot of 100 of 7 to 8 medicines are 20% of medicines are available, but 88% most of not available. सर ये मैं आपको मैं भी सर मेरा पेशेंट हम भी क्लिनिक के पास जाते हैं. मुझे भी पता है सर नियर बाय नहीं मिलती, ऑनलाइन नहीं मिलती. तो मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत पैशनेट हूँ. ये हमारी रिपोर्ट है सर जो हमने जनरेट की है. और I think we got it. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, sir. Now I would like to call overload. Team
team number 098.
Well, good afternoon, judges. Myself, we are team Overclock and we are here to present Sakshi. So the first question, what is Sakshi? Sakshi is India's first trust infrastructure for trade credit business. जो नेटवर्क होता है उनके लिए नॉर्मली जो इंडिया का मार्केट है, बिजनेस मार्केट है, उसके अंदर सबसे बड़ा पोर्शन एमएसएमईज कवर करती है। तो एमएसएमईज के अंदर जैसे रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, ये सब आ जाते हैं। इन सब के बीच में जो ट्रेड चलता है वो इनफॉर्मल तरीके से चलता है, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हो गया और नॉर्मली कॉल्स के ऊपर हो गया। वो अपना ट्रेड सब इनफॉर्मली करते हैं क्योंकि उनका ट्रेड कुछ ज़्यादा बड़ा होता नहीं, जैसे कि नॉर्मल लैंड के ऊपर चलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनफॉर्मल होने की वजह से कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो जब दोबारा पेमेंट जो लैंड चुकाने की बात आती है उस टाइम पे कई बार डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, सामने वाला अवेलेबल नहीं होता है या फिर सामने वाले का बिजनेस नहीं चला होता है तो वो पैसे दे भी नहीं पाता है। तो उसमें जिसने लैंड दिया होता है वो अटक जाता है। तो हमारा जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो मैंने आपको भी क्लियर कर दिया कि जो लैंडर है उसको दिक्कत आती है, जो बायर है वो दे नहीं पाता है, तो उसके लिए भी ट्रस्ट मेंटेन करना मार्केट में दिक्कत दे देता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है साक्षी। साक्षी क्या करता है कि बायलैटरल ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन करता है सबसे पहले तो, कि दोनों जो मतलब लैंडर और बायर है वो दोनों अपना जितना भी ट्रेड है वो हमारे ऐप के ऊपर एनलिस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू उन दोनों की तरफ से कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ ये है और हमारा जो ऐप है वो उसे वेरीफाइड कर देगा। जैसे वो वेरीफाइड हो गया तो उसके अंदर जितने भी वेरीफाइड क्रेडिट टर्म मतलब जितने भी क्रेडिट टर्म्स हैं वो सब डिजिटली वेरीफाइड रहेंगे। तो जिससे कि बाद में कभी दिक्कत आती भी है, डिस्प्यूट भी होते हैं, तो उसके बाद एक लीगल प्रूफ रहेगा कि हमारा ट्रेड हुआ है और वो बाद में उसमें जितने भी इश्यूज आते हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी सीमलेस ट्रेड हो जाएगा। और इससे बायर को क्या फ़ायदा होगा कि उसका जो ट्रेड का जो हिस्ट्री है वो उसमें क्लियर रहेगी और अगर वो कंटिन्यूसली अपने लैंड लगा कंटिन्यूसली पे करता रहता है तो उसका ट्रेड रिकॉर्ड जो है वो एक अच्छा हो जाएगा हमारे ऐप पे। इसके लिए हम उसे एक सिविल स्कोर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसके बाद में भी फ्यूचर में जो ट्रेड होते हैं वो आसान हो जाएंगे और लैंडिंग के टाइम पे भी वो उसके लिए सिंपल रहेगा क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है वो क्लियर है, तो लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो मार्केट साइज है वो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 63 मिलियन एमएसएमई, उसमें जो सैम हमारा पोर्शन है 15 to 20 मिलियन वो क्रेडिट यूज करते हैं अपने ट्रेड के लिए, और ये मिनिमल एस्पेक्ट है। और हमारा जो बिजनेस है जो एकदम डेंस क्लस्टर्स होते हैं 1.5 to 2 मिलियन, जो हमने 1% के अकॉर्डिंग निकाला है, इतना तो नहीं है। तो हमारा जो सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है कि पहले तो बिजनेस इंटरफेस का एक लेयर रहेगा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन इंजन रहेगा जिसमें बायर और ट्रेडर जो है अपना वो ट्रेड उसके अंदर मार्क करेंगे कंफर्मेशन के लिए। फिर जो डेटा लेयर रहती है और जो लेजर है मतलब जो ट्रेड का जो डेटा है वो सारा उसमें रहेगा।
और जो ट्रस्ट क्रेडिट इंटेलिजेंस लेयर, मतलब जितना भी आपका क्रेडिट है उसको कम्प्लीटली क्रेडिट क्लियर, मतलब वो ट्रस्ट के हिसाब से आपने जो भी किया है वेरीफाइड वो उसके अंदर मैनेज करेगा। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है, सबसे पहले तो सास मॉडल के अंदर हम इसमें वर्क करेंगे। रेवेन्यू मॉडल को सेट, तो रेवेन्यू मॉडल के अंदर इसमें रहेगा कि पहले तो स्टार्टिंग में तो 10 पेड जो होंगे वो फ्री में रहेंगे ताकि वो उसका एक बार यूजर एक्सपीरियंस लीजिए। स्टार्टर प्लान रहेगा 199 पर मंथ रुपीज का, जो एकदम मिनिमम कोस्ट है, जिसमें उसको कोई इशू आएगा नहीं बाद। अनलिमिटेड वेरीफाइड ट्रांजेक्शन रहेंगे प्लान के अंदर। हमारे पास क्रेडिट डैशबोर्ड रहेगा, पेमेंट ट्रैकिंग रहेगी, ऑटोमेटेड फैमिली पेमेंट रिमाइंडर्स रहेंगे। 499 वाला जो प्लान है वो हमारी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा, जिसमें आपके पास सब कुछ है स्टार्टर के अंदर। एडवांस ट्रेड क्रेडिट एनालिटिक्स, मतलब आप किसी ट्रेडर की हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें एनालिटिक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे थ्रू। पेमेंट बिहेवियर इंसाइट्स, वो किस तरीके से पेमेंट करता है, डे टू डे उसकी जितनी भी पेमेंट हिस्ट्री है वो सब आपको रिमाइंड की जाएगी। काउंटर पार्टी रिस्क अलर्ट, मतलब अगर उसकी हिस्ट्री खराब है तो हम आपको पहले अलर्ट कर देंगे उसके अंदर। 999 जो प्लान है वो एकदम प्रीमियम प्लान है, जो 0.1% यूजर इसको यूज कर सकते हैं, इसमें तो आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसके अंदर सीधा इम्पैक्ट है कि रिड्यूस रहेंगे, डिस्प्यूट्स रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि आपके पास सीधा रिकॉर्ड है आपके सारे ट्रेड्स का। प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो फॉर एमएसएमई, मतलब अगर आपका कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल रहेगा आपके पास, अब फिक्स डेट के ऊपर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपका जो बिजनेस है वो सीमलेस चलेगा, जिसमें बिजनेस ग्रो भी होता है, नए बिजनेस को भी टाइम मिलता है। अनलॉकिंग फाइनेंसिंग फॉर ट्रेड, मतलब अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो आपको फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड हो सकती है ट्रेड के लिए। नेशनल ट्रेड क्रेडिट नेटवर्क, पूरे नेशन को इसके थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है ताकि अच्छा ट्रेड क्रेडिट नेटवर्क बनाया जा सके। आपके इस मॉडल का करंट में कॉम्पिटिटर और वो कितने इंटरेस्ट ऑफ रेट पर अलाउ कर रहा है उसको लेंडर को मनी देने के लिए? फिलहाल तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इस फील्ड में। जो नॉर्मली जितने अलग अलग ऐप हैं वो सिंगुलर बेस के ऊपर, जैसे कि अब खाता बुक को ही ले लो, वो सिंगुलर बेस के ऊपर ही करता है। जैसे कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ट्रेडर ने रिकॉर्ड कर दिया, पर बायलैटरल वेरिफिकेशन नहीं है उसके अंदर। इस ऐप पे दोनों लोग एक ही जगह पे वेरीफाई कर सकते हैं अपने ट्रेड को, मतलब खाता बुक को मैनिपुलेट कर सकता है, आगे उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो, क्योंकि एक बार वेरीफाई हो गया वो बाद में फिर दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो ये चेक करता हो कि मेरे को सिविल के अलावा जो मैं ये चेक कर सकूँ कि मेरे को इस एमएसएमई को लोन लेना चाहिए या नहीं, अभी करंट कोई अवेलेबल है? एमएसएमई का लोन ओनली पैसे में नहीं होता है ना। मान लो मैंने मैन्युफैक्चरर से माल उठा लिया, इट्स नॉट अबाउट लोन, लाइक इफ मेरे को 50 लाख का माल उठाना है पर मैं एज ए मैन्युफैक्चरर आपको नहीं देना चाहती हूँ, दोनों ही केसेस में कैन आई चेक की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है? हाँ बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। तो करंट में ऐसी ऐप है या नहीं है? जस्ट चेक, देयर इज वन और टू इज अवेलेबल। वहीं जाके अभी रिसेंटली मतलब ऐसा कुछ हुआ ना तो उसमें वहीं जाके वो चेक हुआ कि लास्ट टाइम मैं मतलब होलसेल पे माल भी खा सकता हूँ या नहीं। That's why I asked, but it's really good and it's worth actually in correct market. If you may allow, I can show you the demo. Yeah. Thank you, sir. Now I would like to invite Team Meta, table number 100. Hello. Good morning, judges, and good morning, everyone. My name is Karthik Swami, and this is my teammate Karthik Brahman. So, our proper statement was that अभी के टाइम पे ट्रेडिशनल लर्निंग यूज होती है। इसके अंदर लाइक टीचर्स आपको नोट्स सेंड करते हैं या फिर लाइक बोर्ड आपको इंस्ट्रक्शंस
या लाइक एक्सप्लेनेशन लेके चल जाते हैं, आपको लाइक इंटरेक्टिव वे में उसको समझना होता है, लाइक वो जो वैल्यूज उसने लिखी है ChatGPT में या फिर आप कहीं भी जाके समझते हो, लाइक वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है और रियल टाइम में कैसे चेंज होती है। तो हमने एक सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है। इसके अंदर लाइक हमने इसको अभी RTO स्पेसिफिक रखा है, इसके अंदर हमने RTO की 5 ब्रांचेस और उनका सिलेबस ऐड करा है। तो लाइक अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, लाइक उसको इंटरेक्टिव वे में समझना है, तो आप इसके अंदर जस्ट उसका सब्जेक्ट ऐड करें और सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक ऐड करें। टॉपिक के हमने 3 लेवल्स रखे हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। बिगिनर के अंदर आपको लाइक एकदम ईजी वे में, एकदम प्रॉपर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ चाइल्डिश वे में आपको समझाएगा और पूरे कीवर्ड्स कवर कर देगा उस टॉपिक के। एंड इंटरमीडिएट के अंदर थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज होगी। एडवांस के अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको सिमुलेशन मिलेगा, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस। लाइक जैसे आपने एरे ऐड करा तो उसका एक पूरा सिमुलेशन ऐड हो जाएगा, लाइक एरे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, आप उसकी तरफ से वैल्यू इंसर्ट करके उसके अंदर लाइक कैसे एरे बनता है, कैसे डिलीट होता है, नोट्स वगैरह सब आप लाइक कोई सा भी टॉपिक का एडवांस सिमुलेशन है या कैसा सिमुलेशन है, सारे टाइप के सिमुलेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई इसके अंदर लाइक प्री इंसर्टेड सिमुलेशन नहीं है, आप खुद ये टाइप के सिमुलेशन ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको एक दो सिमुलेशन इसके अंदर दिखा भी दूंगा, और आपने अगर कोई टॉपिक ऐड करा है, आपको लाइक टेस्ट करना है कि आपको समझ में आया है नहीं आया, तो आपको जस्ट टेस्ट के अंदर जाना है और जो भी आपने टॉपिक ऐड करा है उसका उस लेवल के हिसाब से 20 क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे और आपको हर बार लाइक उस 20 क्वेश्चन में से रैंडमली 5 to 10 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट होकर दिखेंगे, ताकि लाइक जितनी बार आप टेस्ट होगे वो आपको अलग अलग दिखेगा। तो लाइक मैं इसके अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर लाइक एक टॉपिक ऐड करता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके 3 लेवल्स है, मैं तीनों बार इसको ऐड करूँगा। एक बार मैंने इसको एडवांस के लिए ऐड कर दिया, एक बार मैं इसको बिगिनर के लिए ऐड कर दूँगा और एक बार के लिए इंटरमीडिएट के लिए। तो एडवांस के अंदर लाइक पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन इसमें जनरेट हो जाएगा, प्लस उसका एक सिमुलेशन भी जनरेट हो जाएगा जो कि इंटरेक्टिव होएगा। आपको जस्ट इसके अंदर टॉपिक का नेम डालना है और इसके अंदर लाइक आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि आप कौन से सेमेस्टर के अंदर हो या कौन सी ब्रांच आती है। लाइक पहले से हमने इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड वे में आर्टिकल सिलेबस फीड करा हुआ है, आपको जिस सब्जेक्ट का नेम डालना है और ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करेगा कौन से सेमेस्टर का है और लाइक क्या सब्जेक्ट कोड है, उसमें क्या टॉपिक्स है, क्या यूनिट्स है, क्या कंटेंट है उसके अंदर का। उस कंटेंट के बेस पे ही आपका जो टॉपिक ऐड होएगा, उसका जो कंटेंट जनरेट होएगा वो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में उस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जनरेट होएगा। लाइक अगर आपने अभी इसके अंदर 3 टॉपिक्स ऐड करे थे, तो अगर मैं इंटरमीडिएट के अंदर जाके देखूँ तो प्रॉपर की पॉइंट के साथ सारा जो भी एक्सप्लेनेशन है सारा जनरेट हो गया है। इंग्लिश में भी होता है, अब स्टूडेंट को दिक्कत ये आती है लाइक इंग्लिश में को समझ में नहीं आता है, तो वो लोग ChatGPT बोलते हैं इंग्लिश में, तो लाइक इंग्लिश और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा साथ में, और इंस्टेंट होता है, कोई आपको लाइक ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसका टाइम नहीं देगा। और अब मैं इसके अंदर बिगिनर और इंटरमीडिएट, बिगिनर के अंदर लाइक थोड़ा सा कंटेंट कम है लेकिन लैंग्वेज ईजी है। अगर एडवांस के अंदर जाऊँ तो एडवांस के अंदर हमें थोड़ा सा ज़्यादा वो मिल जाएगा, लाइक एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाएगा और सिमुलेशन बहुत अच्छा मिल जाएगा एडवांस। और अगर आपको कोई टॉपिक के अंदर लाइक इशू आ रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, मेरे को 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर इसने दिए हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा लाइक क्या चल रहा है सिस्टम, तो इसके अंदर आपने चैटबॉट दिया है, इसको पता रहेगा कि कंटेक्स्ट अवेयर चैटबॉट है, इसको पता रहेगा कि आप कौन से टॉपिक में पढ़ रहे हो, आपको जिस बताना है मेरे को सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये बता देगा आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं कोई सा भी सिमुलेशन चला के देखूँ, लाइक चला के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैं चलाऊँ, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में टॉपिक इसमें ऐड करा, तो इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस इसका एक एडवांस सिमुलेशन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, लाइक नॉट एवरेज, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के जो सिमुलेशन होते हैं वो ही एडवांस होते हैं, आपको समझ में आते हैं। इसके अंदर जो पैरामीटर्स है आप पैरामीटर्स को ट्रेक कर सकते हो, पैरामीटर्स आप ट्रेक कर सकते हो, लाइक जैसे भी ग्राफ्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं प्रॉपर, इसके अंदर जो भी वैल्यूज है सारी आपको डायनामिक दिखेगी, और ये लाइक आपको कुछ अलग से प्रॉब्लम नहीं देना पड़ता, इसको पहले से ही पता है, और ये सारा ओनली आपके RTO के कंटेंट के हिसाब से ही जनरेट होगा। कोई आपको लाइक अननोन वैल्यूज नहीं दिखेगी इसके अंदर, लाइक इसमें कौन से ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई, और इसका एक टेस्ट भी साथ में जनरेट हो जाता है साथ में। और थोड़ा सा गेमिफाई करने के लिए लाइक आपने टेस्ट दिए, उस टॉपिक को किस किस बच्चों ने टेस्ट दिया है उसका आपको लीडर बोर्ड दिखेगा, और ये हाई स्कोर सेव करता है, तो लाइक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव आप वेरी कर सकते हो लाइक, और लीडर बोर्ड के अंदर आपको टोटल टॉपिक्स के टोटल स्कोर दिखेंगे टेस्ट के। इसके अंदर मेरी एडमिन आईडी भी है, लाइक अगर मैं एडमिन आईडी में जाऊँ, लाइक अगर किसी स्टूडेंट ने अननेसेसरी कोई टॉपिक ऐड कर दिया है, तो मैं सारे के सारे लाइक जो भी मेरे टॉपिक्स हैं और जितने यूजर्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, सबको एडिट या डिलीट कर सकता हूँ। सारे फीचर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे।
इसके अंदर आपको कोई प्लेटफॉर्म स्विच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक फ्रेगमेंटेशन नहीं करते हैं बच्चे, लाइक ChatGPT पे एक्सप्लेनेशन के लिए जाते हैं, यूट्यूब पे सिर्फ मतलब विजुअल मिलता नहीं, इंटरेक्टिव नहीं होता नहीं। So, did you check the trending apps and the platforms which provide the same kind of content? Yes, sir. So like the major app, like there was virtual apps, with apps, but there was like आपको पहले से इसके अंदर like edit simulations मिलते हैं। आपको like ऐसे नहीं कि आप खुद से ऐड कर रहे हो कोई टॉपिक, उसके अंदर जो टॉपिक और सिमुलेशन ऐड है आप उन्हीं को एक्सेस कर सकते हो, आप खुद की तरफ से कोई एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा होता है। How did you build the simulations here? Like, कैसे build किया है? सर लाइक HTML फाइल जनरेट करता है, लाइक हम इसके लिए जेमिनी की फ्लैश की पेज लिए, क्योंकि वो बैच होता है UI के लिए और एनिमेशंस के लिए, तो वो HTML फाइल जनरेट करता है जिसको हम आई फ्रेम के अंदर सिमुलेशन के अंदर दिखाते हैं। So you're using the call to the model and then model giving you. So like we are using multiple models, like हमने explanation के लिए GPTs 120 यूज किया है, चैटबॉट के लिए GPTs 20 यूज किया है, एंड क्वेश्चंस के लिए हमने llama 3.1 इंस्टेंट यूज किया है। Okay. Good. It's like पूरा deployed है, everything is hosted, and we have new users, like हम खुद इसको एग्जाम्स के लिए यूज करते हैं, very useful. Very good. Thank you, sir. Any queries? Now I would like to call Team Elytra and table number 105. Hello everyone, I would like you to imagine a scenario. Imagine a judge is sitting on a Supreme Court bench and he has to make a life-altering decision. The defense counsel has just submitted a 100-page documentation citing a Supreme Court judgment that previously has been made. The judge goes on and to check the judgment does not even exist. This is not a hypothetical story. This has actually been happened on February 17, chairing the bench CGI himself. The issue was a lawyer has cited a Supreme Court judgment that this never happened. So to deal with this, the Indian legal system does not need another AI. A text generated machine which does not understand the contextual of Indian legal system and everything regarding it. To solve that particular problem, we have decided to build this particular platform. I would like to walk you through our first feature, where is citation auditor. What it does is you can upload your legal document or your PIL before submitting to the court. It goes to the actual database of Supreme Court or High Court, and then it finds that relevant citation or that relevant case exists or not. Once it does find that case, okay, the case does exist, but is the quotation true? Does the judgment actually happen or said what it said? It goes on to read that particular judgment PDF and then draws the conclusion based on that. Just give us a minute and it will goes online. Once all through the database, there is no AI hallucination, is literally not possible. We are No, I mean, how are you accessing the code database or something like that? Oh, it's a public database. Once the database has been uploaded on AWS and we just download it directly through that. All the PDFs of judgment was on AWS. So
It's publicly available. Publicly available. And you download it and you keep it on your database. Yeah, we downloaded it. But the problem was with the database was it was very fragmented. We cannot actually index into each of the judgment based on how we wanted it. Yeah. So to deal with this particular problem, what we did was we spin up a local 3 billion parameter model. We passed the PDFs into the model, created the summary of those PDF along with the index and actually of the judgment. Once that is done, we created embeddings of each of those summary to kind of index into find that particular PDF in the judgment so we can refer it. Which database have you used? It was Indian. So we are not using any particular database as of now. We are MongoDB. Yeah. No, you are not using. No. That is not. We are just using vector DB for semantic search. The Chroma. Yeah. No, but how you like? For example, you have the PDFs of Supreme Court orders available in public domain. How are you like accessing those PDFs? Yeah, because it's just locally available on the computer. No, but take a case where like millions of. That is where the AWS comes on, as I said. No, but what AWS, like which database, which service? Which AWS database, which AWS service? S3 bucket. But S3 doesn't give you an option to like do the right indexing. Like how would you really make your search so powerful that your, like for example, you want to retrieve the data, right? Yep. Now you have millions of cases. They are very unique. How would you, like my case belongs to one of the million cases. How would you go and search every case? S3 doesn't, it's not good for retrieval. S3 would not help in that particular use case. I think we would then move on to some more advanced database. Did you get to think about it? Yeah, we would have to think about that. For now, we have only 5,000 PDFs, so that works pretty fine for us. Another is case research agent. What it does is, example, a senior lawyer has a team of lawyers. He has associates, he has interns, all of them looking into some case where they have to fight and strong arm that particular arguments they are going to make. Yeah, to solve that, we are just going through the database again, finding the most relevant cases accordingly, and just strong arming the. How does idea come to your mind to choose this different line? Because just last month this case has actually happened where the lawyer has quoted this particular case, Mercy versus Mankind was the name of the case, and it was never a Supreme Court case. It was very much prevalent in the news, and the headlines were AI is not going anywhere. So we are like, okay, it's good because like we are working, but most of the domain are still untouched. We are facing issues, so it's good that you at least you choose a different area where everyone in their life facing challenges, especially like legal, police department, and all these. So it's good that you have selected this area. Congratulations. Good work, really good work there. Now I would like to invite Team Quantum Twister, table number 119. Good afternoon, sir and ma'am. I am Kishan Onkar from Team Quantum Questions.
and our idea is genomics AI. मैं एक PCMB स्टूडेंट रह चुका हूँ 11th-12th में, मैंने नीट भी दिया है और JEE भी दिया है, तो मैं बायोलॉजी को आराम से जो टेक्नोलॉजी है उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। आपको पता होगा कि जो DNA होता है हमारे पास, उसके अंदर 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, A, T, G और C। ये अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, तभी हमें हमारी बॉडी में जो कलर पिगमेंट है वो अलग अलग दिखता है। अगर किसी के बॉडी में ब्लू आइज है तो उसका सीक्वेंस अलग होगा और दूसरे का सीक्वेंस अलग होगा। तो ये हमारा बेस आइडिया है जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आजकल आपने बायो इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा, जिसमें लैब बेबीज बनाए जा रहे हैं आजकल। तो ये अभी फॉरेन में होता है, इंडिया में अभी इसका कोई मेजर स्कोप नहीं है। तो जो फॉरेन में जो लैब बेबीज बनते हैं उसके अंदर अगर मुझे किसी बच्चे का कलर ब्लू चाहिए आइज का, तो मैं क्या करूँगा, मुझे किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन पे जाकर के DNA के उस जो कॉम्बिनेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं उसकी आइज का कलर ब्लू में आउटपुट ले सकता हूँ। अब अभी क्या होता है कि जो पुराने जो सिस्टम्स यूज हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं जिनके अंदर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है। तो इसलिए हम अपना मतलब एक प्रोजेक्ट लाए हैं जो कि है जीनोमिक्स AI। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी जीन का नाम डालेंगे तो आप उसके सारे जितने भी वेरिएंट्स जो कि अवेलेबल हैं, जो अभी तक रिसर्च करे जा चुके हैं, उन सबके वेरिएंट्स को आप देख सकते हैं और उसमें कौन सी पोजीशन पे कौन सा जीन आता है ये भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कोविड आया था, मैं रियल लाइफ एग्जांपल में कोविड आया था, तो उसके अंदर अलग अलग वेरिएंट थे, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ऐसे अलग अलग कोविड के वेरिएंट्स थे। अब जब डेल्टा से ओमिक्रॉन में उसका ट्रांजिशन हुआ तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो गया और उससे बहुत सारे लोगों की जान गई। अब इसके वैक्सीन बनाने में हमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमें ये नहीं पता चल पाया कि कौन से कॉम्बिनेशन में चेंज आया उसके जीन के। तो हमारा ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे जो भी जीन में चेंज आया वो तुरंत बता सकता है। जिस चीज़ को करने में महीनों लगते थे, सालों लगते थे, वो आप तुरंत एक दिन में आप उसको कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे पुरानी जो भी वेबसाइट चलती है पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली वेबसाइट है क्लीन वॉर की, जो कि 90s के टाइम पे US की वेबसाइट है जिसको WHO ने बनाया था। इसके अंदर जब डेटा जो है वो बस हार्ड कोडेड है, वेबसाइट में कोई भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं है। तो हमने क्या किया है, एक ओपन जीनोम 2 नाम का डेटाबेस है जिसको 2019 में बनाया गया था MIT के रिसर्चर्स के द्वारा, फिर उनकी फंडिंग रुकने की वजह से वो बंद हो गया। तो हमने क्या करा, उस डेटा सेट को उठाया और उसको और क्लीनवार की वेबसाइट के हिसाब से ट्रेन किया और अब जो हमारा मॉडल है वो इजीली प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन से जीनोम सीक्वेंस में चेंज आया, जिससे वैक्सीन और जो बायो इंजीनियरिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो जैसे ये आप देख रहे हो 4th नंबर वाली जो कॉलम है, तो जैसे ये जीन है, जीन का प्लेयर क्रोमोसोम प्लेयर, तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, कैंसर का जीन हो गया है, ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसको डिटेल में पता करना बहुत मुश्किल है कंप्यूटर के थ्रू, कि अभी जो सिस्टम है पुराना है। अब जो छोटे मोटे जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड में पहले सब कुछ जो थे सिर्फ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी बड़ी कंपनियाँ करती थी, लेकिन जब वो डाटा कॉमन पीपल के पास आया, जब सबको चीज़ की एक्सेसिबल हो गया, तो इसके अंदर एक हमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। तो अभी जो रिसर्चर है, जो स्मॉल रिसर्चर्स है, कॉलेज के रिसर्चर्स है, उनको फंडिंग ना मिलने के कारण वो ये सब काम नहीं कर पाते। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही सस्ते दाम में इसको प्रोवाइड करता है, जो जितना भी डेटा है सबको। नेक्स्ट स्लाइड। हमने इसको नेक्स्ट.js फ्रंट एंड में नेक्स्ट.js यूज़ किया है और जो जीनोम सीक्वेंस है उसको दिखाने के लिए IGBJS से यूज़ किया है, इंटीग्रेटेड जीनोम विजुअलाइजेशन का। और जैसे इंडिया में कैंसर रिसर्च सेल खुली है, तो जो कि इंडिया में कैंसर पर रिसर्च करती है। अब कैंसर का एक जीन होता है BCR, ब्रेस्ट कैंसर जीन होता है ये। तो इस जीन में अगर हम 1 लाख पोजीशन पर अगर कोई चेंज करते हैं तो ये एक ऐसा जीन बन जाता है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में मदद करता है। मतलब एक जीन जिसके अंदर एक पोजीशन पे चेंज आने पे वो कैंसर कॉजिंग था, तो वो अब कैंसर को रोक रहा है। तो इसका I wanted to understand like what is the flow of your application? सर Like how user can use it basically. Okay. So this is our front page. You have to click on launch platform and it will take you to the first option. Sir, let's try BRCA1, it's a breast cancer gene. And on clicking, on searching that, we get all the available variants that are available to us in the world, everything. तो सर इसमें से अगर मैं किसी एक वेरिएंट को चुनता हूँ तो उससे देखो सर मुझे क्रोमोसोम दिख रही है कि कौन से क्रोमोसोम में मेरे को चेंज करना है बॉडी के, क्योंकि मेरे को वो आउटपुट मिलेगा। तो इसका विजुअलाइजेशन है। जब हम जो आजकल की जो मशीनें हैं
वो जब विजुअलाइजेशन करती है तो ऐसा हमें पैटर्न देखने को मिलता है। इस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, जो हमने इसको एआई की मदद से बहुत इजीली ब्रेक किया है। तो वो जो पैटर्न आपको दिख रहा था उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन है ATGC के। तो जो अभी जो आपने पैटर्न देखा उसको अभी के अवेलेबल मशीन से करने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है, क्योंकि हमने सिर्फ 10 सेकंड के अंदर करके दिखाया है और ये पूरे वर्ल्ड में अभी कहीं नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। और जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे ये पोजीशन दिख रही है आपको 25,43,778, तो ये आपके बॉडी में उस जीन की पोजीशन है। इसको मैं मैथमेटिकल से कैलकुलेट कर रहा हूँ। This is really good, but like, what is the source of this data? Invar, an open genome database. Oh. It's a government database that have all the data that have been searched till now. Okay. From the 90s. Yeah, this is good. I think it's just worth getting it verified with some medical authority. One most important feature is this thing. अगर मेरे को ये पता चल जाए कि मैं बॉडी में इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में अगर चेंज करूँगा तो मुझे ये आउटपुट मिल जाएगा। जैसे अभी मैं आपको कोविड का एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं इस पोजीशन पे चेंज करूँगा तो इसकी वैक्सीन बन जाएगी, ये हमें पता रहता है, लेकिन उस पोजीशन पे जाकर उसके आसपास का सीक्वेंस देखना ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें क्या है कि मैं अगर स्टार्टिंग पोजीशन डालूँ और एंडिंग पोजीशन डालूँ, अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन डाल दूं तो उस बीच के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आ जाएंगे। तो मेरे को How are you creating this combination? सर जो स्पेक्ट्रम होता है ना, तो उसके अलग लाइट स्पेक्ट्रम है वो, तो अलग अलग लाइट की फ्रीक्वेंसी पे जो भी लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से ये सीक्वेंस अरेंज होता है। ये जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने पहले से बना रखा है। This is coming from database? Yes sir. Are you still studying biology? Because it must require to go in depth for this, like because we are from engineering background, so we don't have such knowledge. What you have. Sir, ma'am, I already studied biology in depth for the examination. So and it is also still related to the project I am studying. Still you are studying that? That good job. This is good, but I think it's worth getting it verified and collaborate with some of your professionals, you know, who are in the medical industry. Because, see, I mean, one person, no matter who, his knowledge is limited. So we can directly collaborate with the government of India, because now they have launched a separate research agency for this, and they are also providing funds for that. We have already shown in slide. Yeah. So do have that engagement, but this is really good. If it is unique in the world, Yes, sir. I think this is a very pure innovation. It's only one in the world. And this is very good. Yeah, very good. सर जी यूनिवर्स की वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हैं 90s की वेबसाइट। No, I think this is really good. Thank you very much. Now I would like to invite Team Code Crafters, table number 134. Team the resistors, table number 140, please come near the console. Hello. Very good afternoon, judges. So, good afternoon, judges. This is Vinay Ramani, the team leader of Team Code Crafters. So sorry. So sorry, judges. मैं एक्चुअली कंपनी नहीं कर रहा था, मैं बस उस सीन को रिक्रिएट कर रहा था जो आज के टाइम पे 80 to 90% स्टूडेंट्स फेस करते हैं। मतलब वो स्किल्स की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो इफ इट वर्क्स योरसेल्फ हम खुद की तैयारी नहीं करते थे। लास्ट मंथ मैं प्लेसमेंट में बैठा था,
मेरी टेक्निकल स्किल्स सॉलिड थी, मतलब आई वॉज दैट कैपेबल कि मैं वो क्लियर कर सकूँ। मेरे को क्वेश्चंस पता थे, मेरे को भी आंसर्स पता थे, बट पहला क्वेश्चन पूछा एंड आई वॉज लाइक क्या बोला, मेरा हाथ कांपने लग गया, हार्ट बीट वॉज एट पीक एंड आई डिस्क्वालीफाइड। एंड लेकर मुझे रिप्लाई भी क्या मिला, बस कि आप सेलेक्ट नहीं हुए। मेरे को कुछ रीजन भी नहीं दिया उन्होंने, मैं कितने भी इंटरव्यूज दे दूँ, बस मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मैं लाइक कर रहा हूँ। सो हियर वी कम टू द सॉल्यूशन, करियर बेस। करियर बेस बेसिकली आपको सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएगा, आपको जीरो से उठाएगा। लाइक स्टार्ट विद अ रोड मैप। लाइक सपोज मेरे को कोई भी स्किल सीखनी है, यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसे कुछ स्किल्स मेंशन है, बट स्टिल अगर मेरे को उनसे कुछ नहीं मेंशन करना है तो मैं इसमें कुछ डाल दूंगा। लाइक सपोज यूआई यूएक्स, ओके, मैं इसमें डालूंगा मेरे को टाइमलाइन कितने टाइमलाइन में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज 1 month एंड माय डेली 2 hours पर हुआ एंड आई एम ए बिगिनर। सो इट विल जनरेट माय रोड मैप कि पूरा ही वीकली डिवाइड कर देगा कि मेरे को फर्स्ट वीक में ये टास्क करने हैं एंड ये मेरे माइलस्टोन्स रहेंगे। लाइक सातक फर्स्ट वीक करना होगा, सेकंड वीक तो ये मेरे टॉपिक्स हैं, मेरे को सेकंड वीक में कवर करने हैं, ये मेरे टास्क एंड प्रोजेक्ट्स हैं एंड मैं इसको डायरेक्टली कंप्लीट नहीं कर सकता बिना टेस्ट दिए। सो सातक को टेस्ट क्लिक करना, थैंक यू। तो ये बेसिकली जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं उनके बेसिस पे टेस्ट कर देगा एंड एटलीस्ट अगर मैं इसमें 33% स्कोर नहीं करता हूँ तो ये मेरा कंप्लीट शो नहीं होगा। सो आई हैव टू गिव अगेन लाइक 0%, जैसा आंसर होता है साथ साथ पढ़ाई ध्यान दो। तो बेसिकली मेरे को रीटेक करना पड़ेगा टेस्ट एंड ये चलता रहेगा एंड लेटर ऑन जब ये कवर हो जाएगा तो बेसिकली हमको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, साथ ही हमको सर्टिफिकेट सेक्शन में या सो दीज आर माय 2 सर्टिफिकेट्स लाइक वेब डेवलपमेंट एंड इंग्लिश, द बेसिक थिंग्स आई कवर्ड। ओके, सो नाउ रोड मैप हो गया, मैंने स्किल सीख ली। Now I have AI tutor, startup. Okay, AI tutor में 4 सेक्शन है मेन। आस्क डाउट, मैं इसमें कोई भी डाउट पूछ सकता हूँ, ये मेरे को पर्सनल आंसर दे देगा बेस्ड ऑन जो मेरे डैशबोर्ड में जो मेरे स्किल्स है अभी तक। अब कोड रिव्यू, मैं कोई लैंग्वेज का साथ ही लाइक ड्रॉप डाउन में जाना। ओके, मेरे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस है ड्रॉप डाउन में एंड मैं कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ विच इज ऑप्शनल कि कोड किस बारे में है एंड विल रिव्यू इट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेरे को कोई भी अगर प्रैक्टिस करना है मैं टॉपिक डालूंगा, डिफिकल्टी लेवल टाइप डालूंगा, कंसेप्चुअल चीज या फिर कोडिंग बेस्ड चीज है एंड इट विल जनरेट ऑल द क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस एंड मेरे को उसमें बता देगा कि ये इसका सॉल्यूशन क्यों है विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड इट हैव स्टडी प्लान एज वेल। ये जो रोड में वाला सेक्शन था सेम है बट वो थोड़ा और ब्रीफ है स्टडी प्लान में। मेरे को पूरा स्टडी प्लान बता देगा करंट लेवल एंड हार्स ऑफ डे पढ़ के उन बेसिस पे साथ में डैशबोर्ड बनाने को। थैंक यू। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू स्किल सीख ली, प्रैक्टिस कर ली। नाउ वी कम टू इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे होगी, साथ ही इंटरव्यू में जाना। थैंक यू। ओके, तो मैं इसमें कोई भी चूज कर सकता हूँ जो लोग कवर करना है। मैंने अभी लैपटॉप Explain roles of HTML, CSS, JavaScript. Kushi, can you please answer it? Okay, let's don't waste that. I'm just completed. So basically मेरा आई कॉन्टैक्ट देख रहा है, लाइक अगर मेरे जैसे आई कॉन्टैक्ट छूट रहा है तो ये कोई डीप साउंड दे रहा है व्हिच इज वेरी इरिटेटिंग। तो मैं कंटिन्यूअसली अपना आई कॉन्टैक्ट, मेरे शोल्डर्स, मेरा बॉडी लैंग्वेज सब मेंटेन रखना है इसमें एंड ये मेरे को लेता हूं Front end or back end, which do you prefer and why? अब ये मेरे को सिर्फ ये नहीं बता रहा, ये मेरे को सिर्फ रिजेक्शन ही दे रहा। नाउ इट इज गिव मी कंप्लीट ब्रीफ कि मैं कहां कम्युनिकेशन मेरी 8% क्योंकि मैंने कोई आंसर ही नहीं दिया फिलहाल। दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द बेसिक फील्ड्स जिसमें मैं कमजोर हूं अभी, मेरे को इन पे काम करना है एंड साथ ही डैशबोर्ड पे जाना। नाउ बहुत क्वेश्चन होता है, मैं अभी 3rd ईयर 6th सेमेस्टर में एंड मोस्ट ऑफ द बीटेक स्टूडेंट ने फेस किया साल के बाद में क्या करना है, बस जॉब लग जाएगी एंड ठीक है, कुछ पता ही नहीं होता। सो हियर वी कम करियर बेस। बस बेसिक 15 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके गोल्स क्या है एंड लेटर ऑन उसके बाद आपको अपना करियर बता देगा क्या क्या पाथ चूज कर सकते हो एंड उसके अलावा रोड मैप क्या वो पाथ तक पहुंच कर सकते हो। Did you check like the trending apps and the websites which are doing the same like shop? There are various tools in the market like Final Round AI, Google Interview Warm-Up and OpenAI ChatGPT. But sir उनके लोग tools हैं like Final Round AI सर वो आंसर सजेस्ट करता है, लाइक जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा होता है ना सर वो डिपेंडेंट हो जाता है उसके लिए आंसर सजेस्ट करेगा मॉक इंटरव्यू जो इंटरव्यू प्रिपरेशन। सर गूगल इंटरव्यू वार्म-अप में कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी डिटेक्ट करता है और सर OpenAI ChatGPT में सर वो स्ट्रक्चर्ड आंसर भी देता है बट वो रियल टाइम इंटरव्यू एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराता। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये सारी ऐप्स अवेलेबल है, इसलिए बहुत जो रियल लाइफ चैलेंजिंग की स्किल्स नहीं है स्टूडेंट्स में, चाहे वो स्कूल की हो चाहे इंजीनियर हो, तो आप स्टूडेंट को इस वेबसाइट तक लाओगे कैसे? ओके मैम,
इसमें ना बेसिकली हमने सबसे पहले ये सोचा था कि हम कॉलेजेस एंड जो भी एक्टर कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट्स है हम उनसे टैप करेंगे, बट आई थिंक नहीं, मैं मेरा टाई अप से मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्कूल के भी हैं, कॉलेज के भी हैं, वो क्या चीज़ मिसिंग है स्टूडेंट्स में कि ये सारे टूल्स मतलब इतना डेटा अवेलेबल है उसको वो यूज़ कर सकते हो और वो अलाइन हो कि वी हैव टू डू समथिंग. इट्स नॉट अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स नॉट अबाउट टाई अप समथिंग. डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल एनी हाउ कहीं पर भी हो, बट डेटा इज अवेलेबल फॉर इंटरव्यू. आप भी प्रैक्टिकली आप क्या वो एक स्टेटमेंट कहना चाहोगे स्टूडेंट को कि वो उस स्कूल को उस स्किल्स को या उस मोटिवेशन को या उस इनर उसको जगा सकें कि हमको कुछ करना है? वेरी नाइस क्वेश्चन. मैं फॉर श्योर इसका वर्क करूँगा क्योंकि मैं कभी इतना डीप में गया नहीं चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा चिल बंदा रहूँ कि तक कुछ सोचना किसी चीज़ के बारे में. सो राइट नाउ आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. It's not question for you, it's for your whole team member because you four working, even not only for these four members, everybody is developing some apps, right? You are very only 30 teams here, maybe 70 teams or maybe 100 teams is working on these hackathons. But my question is for everyone कि आपने इतनी सारी चीज़ें बनाई है, इतनी सारी एप्स अवेलेबल है, बट आप एक ऐसी क्या चीज़ अपने से पीछे वाली जनरेशन को कहना चाहोगे एक स्टेटमेंट में कि पेरेंट्स नॉट पुट सो मच एफर्ट, टीचर्स विल नॉट फोर्स यू एंड यू कैन डू एनीथिंग. दैट्स माय क्वेश्चन बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ एप्स, लॉट्स ऑफ these websites are continue coming. So एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट जो आप अपनी कहना चाहो कोई भी. मैंने अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करी है तो मैं Anybody from the crowd, it's not for only these four members. This is the only one statement I want. किसी का इनर जगह जो टॉप स्टूडेंट है वो तो एनी हाउ जिनको कुछ करना है वो तो कर ही जाते हैं, बट एक एवरेज स्टूडेंट जिसको है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिसिंग हो जाता है या पूरी रात नेटफ्लिक्स देखी, वो एक स्टेटमेंट आप क्या कहोगे कि पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे बेटा इसको बंद कर दो अब कुछ कर लो, तो वो एक स्टेटमेंट मेरे को चाहिए कि आप क्या कहेंगे वो स्टूडेंट, या अपने से नीचे आपके स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे या आपके जूनियर होंगे, वो एक स्टेटमेंट आप क्या कहोगे? बहुत स्टूडेंट है, मोर देन आई थिंक 50 या 70 स्टूडेंट है, एक स्टेटमेंट तो बनता होगा, बाकी सब ऐप से दूर सब कुछ. I know AI is going, but still emotional thing is missing. So what is that statement? One statement that you don't need every day any motivation, any motivational speaker or any party to motivate you. What one statement you want to give to next generation? If you want to learn, then there is nothing any option. but आपको करना ही पड़ेगा. करना है मतलब करना है. आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके लिए. मेहनत करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा. So it's like नहीं करोगे तो you know कि आपके साथ क्या होने वाला है. Thank you so much. So sorry मैं एक मिनट और बताऊँगा. There is one more future. Like जो बहुत टीचर्स यहाँ पे रिलेट करेंगे. साथ ही एक बार डैशबोर्ड में टीचर्स भी जाना. एक ऊपर नेविगेशन आता है. Yeah, thank you. So बेसिकली अगर टीचर्स का वो इतने सारे बच्चों को एक साथ ध्यान नहीं दे पाते. Like अगर कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है या फिर ऑफलाइन. So basically इसमें इतने सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं and I get alerts कि इस स्टूडेंट का लो स्कोर है और पूरा टेंशन दे रहा है यहाँ पे. इसका लो स्कोर कंटेंट वो अलर्ट से रहता है तो स्टूडेंट पर पर्टिकुलरली ध्यान देते हैं. Perfect. I think it's very good. Like as a tool, it has a lot of features. You know, you are thinking 360 degree, which is really great. But only one thing from my end that I feel that tools are really available. Sir, yes, I do. No, see, I'm not complaining again. It's for me. It's just another tool. You know, like ma'am said. Like there are thousands of websites, thousands of tools, but only one out of like 1 million or something which get used, right? अगर आप देखोगे कितनी वेबसाइट्स ओपन होती हैं, तो आपको दिखेगा कि यार यूज तो बहुत कम होती हैं, right? So you have to have some USP, you know, which is really differentiated. You have thought like all the features are there, but what is the key differentiator? So that you need to think about. And it's fine, you don't need to prove it here. Take it as a homework. Think about that what one thing which will attract everyone. So you don't even have to go to colleges and do the collaboration. Facebook never came to our college, right? Like do collaboration. Your students should be on Facebook.
we go to them, we create it out of our. Think around that. Maybe you'll find something X factor. For sure, sir. But I think अगर मैं as a student इसे मैं personally use कर रहा हूँ अपनी growth के लिए. Like अगर ये Everybody uses their own tool. Everybody finds my tool is best, but please think like what people are using for. Next one was a great answer on the question. Thank you very much. Thank you for attending. Now I would like to call the resistors, table number 140. Good afternoon, respected judges. We are team resistors, and our project is about women's safety, a dedicated safety ecosystem for women. So, basically, sir, अभी NCRB का डेटा देखे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स का ब्यूरो है, उसके अकॉर्डिंग हर साल जो है 4 से 4.5 लाख केसेस आते हैं वुमेन्स के अकाउंट। और एक और भी डेटा है जो है कि हर 5 से 8 मिनट में वुमेन्स के अगेंस्ट एक केस जो है रजिस्टर होता है। तो हमारा जो रिसर्च हुआ उसमें 2 चीज़ें सामने आई सर। पहला तो सर रिस्पॉन्स टाइम, और जो दूसरा आया वो था सर इंस्टेंट अलर्ट। इन 2 चीज़ की लैकमेंट थी कि ऐसा नहीं है कि सर जो सेफ्टी सिस्टम है वो है नहीं, सेफ्टी सिस्टम है बट टाइम से वो सेफ्टी सिस्टम पहुंच नहीं पा रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है कि जो वुमेन्स है उनको सेफ फील कराना अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सर ये है एक वेरिएबल डिवाइस एंड एक कंप्लीट वेबसाइट जो इस डिवाइस से कनेक्ट होकर वर्क करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिवाइस का वर्किंग दिखा देता हूँ। वन और 2 जो मल्टीपल नंबर्स वो SMS सेंड कर देगा, इमरजेंसी SMS जो होगा ये सर, ये रहा इमरजेंसी SMS जो आएगा सर हेल्प के साथ। और इसमें एक लिंक होगी गूगल मैप की जिसको आप ओपन कर सकते हैं। आप ओपन कर लो सर ये टाइमिंग। सर हम इसको पहले चीज तो लोकेट कर सकते हैं। सेकंड वन जो सबसे मिसिंग थिंग है हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। आज तक जितनी भी मतलब प्रेजेंट में जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर में तो ऐसी डिवाइस जो $100 में है वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। जो रूरल एरियाज में गर्ल्स हैं या नॉर्मल गर्ल्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, बट ये डिवाइस अफोर्ड। सेकंड थिंग जो हमारा फीचर है सर, अगर SMS से मतलब पेरेंट्स को पता नहीं चलता है या हमारे बिल्डर को पता नहीं चलता है, जैसे बिल्डर को पता नहीं चलता है तो हम इस पर डबल टैप कर देंगे और डबल टैप करते ही सर हमारे जो रजिस्टर्ड नंबर है उन पे कॉल आ जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगा। ये सर सुरक्षा डिवाइस नाम से कॉल आ गया है। ये कॉल अभी उठाएंगे तो कोई आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि इसमें माइक्रोफोन वगैरह इसमें इंस्टॉल नहीं है, बट इन फ्यूचर में इसमें माइक्रोफोन वगैरह इंस्टॉल करेंगे ताकि 2 वे कनेक्शन हो पाए। अभी 1 वे कनेक्शन है। नेक्स्ट वन सर मैं जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दिखाना चाहूँगा, जैसे सर हमारा डिवाइस जो है जब भी हमने एक मैप बना रखा है सुरक्षा मैप नाम से, ओपन सुरक्षा मैप। ये सुरक्षा मैप है जिसमें हमने NCRB का डेटा ही लिया है सर, डेटा सेट जो पब्लिकली उन्होंने पब्लिश कर रखा है। उसमें जब भी सर ग्रीन डॉट्स में जाएंगे तो वो हमेशा बताया ग्रीन डॉट्स पे जाओ निश्चय। ग्रीन डॉट्स ये सेफ जोन है, यहाँ पे हमारे कुछ रैंडम आर्बिट्रेरी जोन में डाल रखा है, बट जब भी हम रेड जोन पे जाएंगे सर ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाएगा कहाँ पे अलर्ट आया है और यहाँ कितने इंसिडेंट्स जो। एक बार मैं आपको इसको फोन पे डेमो करके दिखाना चाहूँगा सर प्लीज। यहाँ से सर सुरक्षा सुरक्षा जब भी आप रेड वाले पे टैप करो, रेड वाले पे टैप करो सर। ये सर जब ये डिवाइस मैं बताया ना जियो फेंसिंग लाइक अगर कोई डेंजर जो जैसे हमने इसमें मैप कर रखा है जूम रोड डेंजर जैसे ये हाँ सर जैसे ये रेड जोन है
अब रेड जोन के पास इसके प्रीसेट एरिया लाइक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो हमारा बायर है वो कराना चाहेगा 1 किलोमीटर, जब भी वो रेंज उस डिवाइस उस रेंज में पहुंचेगा ऑटोमेटिक अलर्ट जाएगा, हमें कोई टैग कोई कुछ भी नहीं करना है। ये विदाउट यस सर प्रीसेट वैल्यू हम डाल रखेंगे, हाँ तो तुरंत ही अपने को रिकॉर्ड भेज देगा। नेक्स्ट सर मैं वेबसाइट के और सारे फीचर्स दिखाना चाहूँगा, गो फॉर मोर। Just tell me one thing. Like for example, my sister. Okay, for example, my sister is having this device. Can I doesn't matter she's in green zone, yellow zone, red zone, whatever. I can go and check her location every day. जब तक डिवाइस एक्टिवेट नहीं होगा लोकेशन आप नहीं चेक कर दीजिए। हमारे जो नॉर्मल डिवाइस है उसके लिए अगर आप इसका प्रीमियम फीचर हम आपको दिखाएंगे जब भी हम प्रीमियम फीचर जो प्रीमियम फीचर है मतलब जब भी हम इसको हाई कॉस्ट पे बेचेंगे इसमें, क्योंकि सर जब भी हम रियल टाइम डेटा लेते हैं बहुत का अमाउंट में डेटा आता है तो उसका कॉस्ट जो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। Let's forget about the premium not premium. Yes, as a feature. Yes sir, as a feature we can install it. Can I track the location every Yes time? sir, every time. Okay. But authentic जो है how is it mapped? Like does it take the SIM card or something? करंटली सिम कार्ड लगा हुआ है बट इंडिया को छोड़ के बाकी जो देशेस हैं उनमें दो जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है। फर्स्ट वन लोरा, सेकंड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफी महंगा है बट लोरा जो है इंडिया में आ चुका है। लोरा के अगर हब्स क्रिएट हो जाते हैं 4 से 5 किलोमीटर पे तो बहुत ही इजीली हम इस सिम को भी रिप्लेस कर देंगे, जो हमारा सिम का खर्चा है वो भी खत्म हो जाएगा। लोरा ऑटोमेटिक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर ऑटोमेटिक हमें जो है वो भेजेगा। ये सर हमारा विजन प्रोडक्ट था। एंड इसका बैटरी वगैरह चार्ज होता है कैसे? ओके 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 विजन प्रोडक्ट सर इसको हमने कैलकुलेट कंप्लीटली मेजर कर रखा है डायमेंशंस को, सारा डेटा लेके ये 45 into 45 mm में आ रहा है जो सर मैच बॉक्स के it gives the live location live location ये सर लाइव लोकेशन विद ट्रैकिंग बोथ with tracking both यस सर बोथ। सेकंड वन फीचर को जियो फेंसिंग बताया। जैसे सर अभी हम एक एग्जांपल लें, ये अपने घर से 50 किलोमीटर दूर है, इसके पास से 10 किलोमीटर दूर है पुलिस स्टेशन। बट आज के टाइम में सर कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक आज के टाइम में सर रैपिडो, स्विगी, जोमेटो ये सारे के राइडर हर एक कोने पे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो शहर हो या थोड़ा लेस अर्बन एरिया हो। तो हमने कम्युनिटी लेवल का सोचा है कि इनके साथ हम एक कोलैबोरेशन करेंगे जिसमें हम ये डालेंगे कि जिनकी रेटिंग्स 4.578 ये होगी, सिर्फ हम उन्हीं को ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ओके दैट इज कोलैबोरेशन। आप उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी। सर बिजनेस है लाइक सर जैसे आईसी कॉलेज में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसे एक फ्रेशर या स्टार्टर किट देते हैं, लाइक उसमें रहता है बॉटल समथिंग। जो बच्चे दूर से लाइक सर हम ग्रेटर नोएडा से हैं तो हमारे यहाँ बिहार, यूपी और इधर के बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो अगर वो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ला रहे हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए, अगर हम उन्हें बता दें कि स्टार्टर किट में एक ऐसी डिवाइस है जो आपके बच्चे के हेल्प टाइम में हेल्प कर सकती है। No, I think we got it. Yeah, this is great. नेक्स्ट सर एक रेंटल है जैसे लाइक जो actually let us ask the question. We got it. This is great. Yeah. Hello, Apurva, it's question for you. आप प्रैक्टिकल लाइफ में 3 पेजेस बताइए जो अपनी सेफ्टी के लिए यूज करती है। जैसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमारे पे बहुत सारे हिली एरियाज है और जैसे हम लोकल लोग हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे ये वाला क्राइम हुआ है। जैसे आप लोग कोई जैसे आप लोग बाहर से हमारे इधर एंटर करोगे तो आपको कुछ एरियाज ऐसे नहीं पता होंगे कि ये सेफ है या नहीं है। जैसे गाँव वगैरह में लोग बेसिकली टूरिस्ट के जैसे घूमने के जाते हैं तो जैसे गाँव वगैरह में औरतें घास काटने जाती है, मतलब गायों के फॉडर वगैरह लेने जाती है, तो वहीं पे बेसिकली कुछ ऐसे क्राइम उनके साथ हो जाते हैं। तो फिर जो ये डिवाइस ये इस डिवाइस में जो आप रेड जोन बता रहे हैं वो डेटा आप कैसे उठा रहे हैं कि रेड जोन है? मैंने ये जो कंप्लीट डेटा है वो एनसीआरबी की डेटा से मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने डिवाइस से कि मैंने जो डेटा सेट सारे डाउनलोड करे हैं रेप केसेस में या छोटे मोटे जितने भी केसेस जो गवर्नमेंट वेबसाइट एनसीआरबी ने उसमें डाटा पे अपलोड कर रखा है वो सारे डेटा सेट्स को उठा के हमने बैकेंड में फीड कर दिया है और उसके हिसाब से हम हीट मैप क्रिएट कर रहे हैं वो उस तरह का। एक हमने लोकल हीट मैप भी क्रिएट किया है जो उस लड़की के उसका है लोकल का प्रयागराज
वो भी हमने 100% चेक करके रखा है, वेरीफाइड किया, उसने पता कि हाँ इस तरह के क्राइम, मतलब वो तो भी हमारी में नहीं जुड़ी है, तो उसने सब वेरीफाई किया कि हाँ ऐसे ऐसे क्राइम हो रखे हैं जो आपने इसमें डाले हैं। Okay, Apurva, you can continue with your 3 answers. तो मैम तब जैसे कुछ तब वो जाके अगर वो ये डिवाइस वेरेबल करती है, अगर मैग्नेट के रूप में, अगर उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसको प्रेस कर सकती है, तो लोकल जो भी पुलिस No, मेरा question is without device, 3 practical reasons. I am not saying any device you have nothing, right? When we are coming to college, we don't have anything. हमारे पास कुछ नहीं था, ना कोई डिवाइस थी, ना कोई फोन था, बट इसमें हम अपनी टेक केयर करते थे। तो वो 3 मेजर क्या पॉइंट होंगे जो आप डेली यूजेस में यूज करते हैं, जो आपको लगता है कि शायद करनी चाहिए हमें? मैम बेसिकली जो छोटे छोटे वेपन्स आते हैं हम उनको अपने साथ कैरी करते हैं, हर कोई कैरी करता है अगर ट्रैवल करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और बेसिकली लड़कियों को ज़्यादा अकेले जाने नहीं दिया जाता है, उनके साथ कोई ना कोई होता है अकेले ट्रैवल करने के लिए। नहीं, बट अब आप खुद ही उत्तराखंड से आज जयपुर आई हैं, उससे पहले भी आप कॉलेज पढ़ रही थी। तो मेरा क्वेश्चन वापस यही कि आपको पूरी फ्रीडम दी गई है, आपको जॉब करने की फ्रीडम दी गई है, आपको कॉलेज में आने की फ्रीडम दी है, तो आप क्या मेजर आप कंसिडर कर रही हैं कि भाई मैं ये नहीं करूँ तो मैं सेफ रहूँगी विदाउट डिवाइस? समटाइम इट्स हैपन 365 दिन में से कि एक दिन वो डिवाइस चार्ज नहीं थी, मैं लेट हो रही हूँ और मैं निकल गई। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो क्या प्रैक्टिकल मेजर है, वो दैट आई एम सेइंग वी आर क्रिएटिंग ऐप्स, वी आर क्रिएटिंग वेबसाइट्स, वी आर क्रिएटिंग लिंक्स, बट क्या प्रैक्टिकल चीजें जो हम डे बाय डे में भूलते जा रहे हैं? जैसे मैं आती हूँ ट्रैवल करके, तो मैं सबसे पहले अपने फादर को इन्फॉर्म करके आती हूँ, मुझे पता होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो व्हाट्सएप पे तो मैंने लाइव लोकेशन भेजती हूँ, मैं वो कभी कभी बंद कर तो मुझे पता रहता है। आप ट्रेन में बैठे और आपका फोन स्विच ऑफ हो गया, या आप ऑटो में बैठे ट्रेन से उतरे फोन स्विच ऑफ हो गया, अब आप क्या मेजर लेंगे? और आपको स्टेशन से 30 किलोमीटर जाना है, फोन स्विच ऑफ हो गया, आप ऑटो में बैठ रहे हो, आधा रास्ता क्राउडेड है और आधे रास्ते में कुछ भी नहीं है। मैम जो मेरे आसपास कम्युनिटी के लिए जैसे पुलिस स्टेशन या जो रेलवे स्टेशन भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे जो टिकट वगैरह काटते हैं तो उसमें हेल्प ले सकते हैं। देखो मैंने फेस किया, आप ऑटो में बैठे रेलवे स्टेशन से उतर कर फोन स्विच ऑफ हो गया, ऑटो वाला भी ठीक है, आप भी ठीक हो, इट्स नॉट लाइक आप ऑटो में बैठ के 30 किलोमीटर जाना है। अब आप ऐसा क्या करोगे कि ऑटो वालों को ये जाए कि भाई इसने घर फोन किया हुआ है या कुछ भी ऐसा है कि मेरे को ध्यान रखना है। अब वहाँ पे तो आप ऑटो रोके तो सराउंडिंग वालों को बोलोगे नहीं, तो आप क्या करोगे? मतलब वही भी पूछना, मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, हमने ये ऐप बनाई नहीं जाना उसको, आपको नहीं जाना है, प्लीज बी प्रैक्टिकल, ऑलवेज नॉट रिक्वायर्ड है। वो क्या प्रैक्टिकल मेजर है जो आप करोगे? मतलब एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस है, आई एम नॉट सेइंग कि उसको डाउट है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं ये कुछ नहीं होगा, मैं 30 किलोमीटर घर पहुंच जाऊंगी। पैनिक नहीं करना है, कंफर्टेबली उनके सामने, मतलब ये फोन ऑन हो उसके आप फोन कर सकते हो राइट, उसको नहीं वापस ये पैनिक नहीं करना है कि हाय हम मतलब फोन स्विच ऑफ हो गया है, मतलब एक्टिंग करते रहना है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं।
वॉइस में बहुत है सर, इसलिए काम करता है, उसको चार्ज सर 40 मिनट मैं पूरा चाइनीज डिजाइन के लोग सीखोल तो इंडिया में बहुत कुछ है अगर गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करके सीखा जाए तो गवर्नमेंट की वेबसाइट रक्षा करके मैं जा रहा हूँ कंप्लीट हाँ ठीक है सोनी सर लगा देना
I'll take an exit, ma'am. I would like to invite Shubham sir on stage. And I would like to invite Niti ma'am to present the conference. Dear participants, I might have to leave due to some family healthcare things, but I just wanted to convey my message to all of you. I personally got really motivated after hearing all the sessions. Like all of your innovations, your projects were really good. So I wanted to give a thank you from my side for igniting that motivation again in myself. And yeah, keep building, guys. It was really good. It was really innovative. You all have skill to develop something which is never has been developed yet. So keep trying, keep trying, keep trying until you didn't find something that you made something really blowing the mind. So, but yeah, it was really good. Thank you very much. Do connect with me on LinkedIn. You can search me with Shubham Malhotra. You will find me. So let's connect on LinkedIn. And yeah, congratulations to everybody. I know that they will be winners 1, 2, 3, but you all are the winners because at least you tried, right? So you tried, you built, you learned something. So you all are the winners. Keep trying, keep building, and see you. Yeah, cheers. Bye-bye.
आगे नहीं हो afternoon. So after this is the biggest hackathon I think so. 330 hours. We have calculated. So from 40 and now today we are going to announce the result. But the good part is कि आपने कोई चीज identify की and we accepted that, and now today the final judging was there with the 3 judges. So now we have with us 2 judges present here. एक को इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, जा चले गए. मैं पूरी प्रोसेस दोबारा बता देता हूँ. उस डेट में आपकी 2 राउंड ऑफ जजिंग हुई थी, राइट? और उसका उस दिन टोटल करके और उसके बिहार पर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें कि थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से पूरा रिजल्ट अभी आज हम लोगों को पिचिंग पे जाना था. सो नाउ व्हाट वी डिड, लास्ट जजिंग एंड टुडेज जजिंग के बिहार पर एक फाइनल इवैल्यूएशन. लास्ट जजिंग जो हुई थी, मतलब लास्ट फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड, नॉट द थर्ड राउंड, राइट? क्योंकि उस पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ. तो नाउ क्योंकि आज दोबारा आप लोगों ने पिचिंग की है, तो ऑल जजेस इवैल्यूएटेड द प्रोसेस एंड दैट इज व्हाट दे हैव गिवन द मार्क्स. और पुराने फर्स्ट सेकंड राउंड के मार्क्स को कंसोलिडेट करके आज का रिजल्ट बनाया गया है, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस. नाउ विद रेस्पेक्ट टू दैट वी आर गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट. सो फर्स्ट वी आर calling the team for the consolation prizes. Bring it on. Bring it on. Please note it down. Next team is for consolation prize is the registers. Please come on the stage.
Team, bring it on. Please be on the stage. इसको लेकर आइए प्लीज. जैसे जैसे नाम हो वैसे वैसे आप the registers. Judges, please. Registers, please come on the stage. ये भी इनको. मैं भी इधर आ जाता हूँ. हाँ, ये काम करते हैं. हाँ, ठीक है. मैडम आप ही आइए वहाँ पे. हाँ जी, आप ही आइए. आप इधर आ जाइए, राणा जी इधर आ जाइए. ये बीच में जाइए. All the best. Congratulations. Next team, please come. अपने प्लीज अभी इसके बाद चेक कनेक्ट करके जिनको आपको बड़ा वाला दिया है छोटा वाला चेक और दिया जाएगा. ओके. एक्चुअल जो ओरिजिनल चेक है वो भी दिया जाएगा. Congratulations. So next team is next. बहुत सरप्राइज रहना चाहिए ना. 4 bites. और कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस. चलो एक और अनाउंस करो. Next team is Code Monk. आइए प्लीज. 4 bites. Not 4 bites. Next team, please. Code Monk. Not there? Online है. Okay, great. So, team Code Monk, congratulations. Online live है या नहीं है? Right. Next, second runner. Team is Bug Smashers. Not there? Online. So congratulations team Bug Smashers. Next, second runner-up is Activators. And next, second runner-up team is Qubit. संजय जी इधर एक क्लैपिंग भी दिखा दीजिए उन लोगों को कि हाँ. ओके. Second runner.
Congratulations. Next team, please be on stage. आप ही के एग्जाम दे उधर आप ही एग्जाम दे उधर ओके you will okay so now for first member of team is Universe 7. And it's a tie with team Refixers. So now time for winner. The winner team is the Overfitters. Congratulations.
तो टीम आपके जिसके भी नाम से चेक बनेगा वो आप पहले नंबर को दीजिएगा, अदरवाइज इंडिविजुअल नाम से ही जाएगा आपको, ठीक है। ये तो अभी आपको जो चेक जो दिया गया है विनाइल वाला, उसमें तो टीम के नाम से, सो कैन वी हैव अ ग्रुप प्रोग्राम ऑन द स्टेज विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज बी ऑन द स्टेज, all team members please be on the stage for the group photograph. The group photograph with all the participants only, not the coordinators. Only participants first. ठीक है, that is good. That is good. Boys, अगर आप नीचे से थोड़ा सा लाइन कर लें, फर्स्ट फ्लोर से, तो ऐसे फोटो नहीं आएगा। सबसे नीचे वाली जो है ना, उससे आप लोग मेहनत हो जाएगी। और बैठ जाइए, और बैठ जाइए, पास हो जाइए थोड़ा, ये ऊपर हो जाइए आप थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, पैर ऊपर कर लीजिए, हाँ, और एक लोग यहाँ बैठिए, थोड़ा सा आप लोग स्प्रेड हो जाएंगे, तो एक रो या नी डाउन करके अगर हो जाओगे ना, दैट वुड बी ग्रेट। एक रो में नी डाउन करके यहाँ खड़े हो जाएंगे, तो उसके पीछे पे खड़े लोग होंगे, सबका आ जाएगा, गुड। ठीक है, हम लोग, हाँ हो गया। सांस रोक के मुस्कुराते हुए खड़े हैं, तो कितना बड़ा टॉर्चर था। नाउ नेक्स्ट ग्रुप फोटोग्राफ ओनली फॉर द विनर्स, प्लीज बी ऑन स्टेज। विद देयर चेक्स प्लीज, अपने अपने चेक लेके जो आपको मिले हैं उसको स्टेज पे आ जाए, और आपके जो ट्रॉफीज मिली हैं उनको लेकर आप स्टेज पे आ जाए। नेक्स्ट फोटोग्राफ फॉर कोऑर्डिनेटर्स। अभी आपके सर्टिफिकेट सबको मिल रहे हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स और विनिंग सर्टिफिकेट जो भी है। टॉप 10 पार्टिसिपेशन, ओके, पार्टिसिपेंट्स यू विल गेट द ई सर्टिफिकेट एंड ऑल द विनिंग टीम्स you will get the physical certificates here also. अरे एक नीचे रो पे बैठ जाओ जैसे अभी बैठे थे, एक ऊपर खड़े हो जाओ, हो गया काम, और सीक्वेंशियल हो जाओ।
कॉन्सुलेशन वाले जो है ना वो इधर आए, वो नीचे वाली बुक उससे सीक्वेंशियल हो जाएगा। कॉन्सुलेशन प्राइजेस वाली जो टीम है वो नीचे वाले पर, कॉन्सुलेशन प्राइज यहाँ है, आप दोनों लोग इधर आइए। कॉन्सुलेशन देन सेकंड रनर अप देन फर्स्ट रनर अप देन विनर, इस तरीके से पास ना प्लीज आप ही आइए आगे और पास। इधर कोई नहीं है कॉन्सुलेशन तीन एक और है नाम बोलते चलो ना। अरे सर्टिफिकेट मिलते जाओ अपने अपने भी। आगे आओ सर्टिफिकेट बनाओ। सेकंड रनर आप इधर से आइए, इस वाले पे बैठो, यहाँ पे बैठो। हाँ इस वाले पे नीचे बिल्कुल ठीक है। अब इधर सेकंड रनर कौन है, इधर आ जाओ। सेकंड रनर इधर आ जाइए आप, इस वाले इस पे बैठिए। फर्स्ट रनर यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे इस वाले पे बैठ जाइए। फर्स्ट रनर यहाँ बैठ जाइए, फर्स्ट रनर यहाँ बैठ जाइए। एक भी अकेले और एक इधर बैठ जाओ बेटा, नीचे कर दो उसको थोड़ा सा, जिससे आपका फेस आ सके। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। विनर बीच में आ गए, आप लोग बैठ जाओ। किस टीम के था, आओ ना इधर। Judges, you please join the group photograph. जी आप ही अपने अपने ग्रुप फोटोग्राफ अपने करना चाहिए पेज पे करो। आप अपने ग्रुप वाइज फोटोग्राफ यहाँ ऊपर स्टेज पे कर लीजिए। कोऑर्डिनेटर्स कम ऑन, एक एक करके कोऑर्डिनेटर्स को फोटोग्राफ। आफ्टर दिस, आफ्टर कोऑर्डिनेटर्स, आफ्टर कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स आ जाओ फटाफट। You all please sit down. हम लोग खड़े हो जाते हैं। Only coordinators. Thank you.
So guys, now you can take your group photograph here on the stage. Now stage is open for you, right? So done. एक चेक पे नाम लिखवाने के लिए एक लोग आप आ जाएं, अपने नाम कोऑर्डिनेटर्स को दे दीजिए, so they can